हेलो हाउस इट गोइंग गाइस वेलकम बैक टू द क्रिक टाइम पॉडकास्ट। भाई बहुत ज़माने हो गए रिकॉर्ड करे हुए। ये ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया की जो 19th नवंबर की लॉस थी उसके बाद से दिल ही नहीं कर रहा क्रिकेट रिकॉर्ड करने का। आई नो वी रिकॉर्डेड अ फ्यू एपिसोड्स आफ्टर दैट बट वेलकम बैक टू द क्रिक टाइम पॉडकास्ट। अ लॉट हैज चेंज्ड बट वी हैवंट। आई एम स्टिल हियर, Sesh is still here and we're perfectly capable of covering this year's IPL. भाई what a festival cricket is going to be. A lot of news that has been coming out of it before even the tournament kicked off, and now that each of the teams have played a game each, there is a bit of an insight into what our predictions could be like following the next few months. Or the final hai Chennai mein, how that could form, as well as the qualifiers and the eliminators in Gujarat and Ahmedabad. Sayash, firstly, how are you doing? How are you recovering from that 19th November loss? I know that's the question that every मतलब वो cricket तो fan is going फिर to ask. ऐसी चीज है, मतलब जो ब्रेकअप वाली चीज नहीं होती कि यू मूव ऑन बट यू डोंट मूव ऑन, वही वाली चीज है यार। मतलब एक जो ब्रेकअप वाला दर्द है वही है, वो तो बना रहेगा हमेशा, बट लाइफ हैज टू गो ऑन। एंड यस, आई थिंक इस बार का आईपीएल थोड़ा सा स्पेशल भी है, थोड़ा सा हाइप अच्छा है। इनॉग्रेशन सेरेमनी भी बहुत अच्छी हुई, प्रॉब्ली धोनी का लास्ट आईपीएल है, कई बड़े महारथियों का लास्ट आईपीएल भी हो सकता है ये तो। अब नया फॉर्मेट भी है, सो looking completely forward to this whole season. And yeah, I hope we give a lot of content for our fans. Yep, that's exactly what I was going to get to. Okay, bhai, there's going to be a lot of IPL content, daily reels, daily content. We'll try and make preview and review videos for every day. I know we haven't done it for the first few days, but it's just because we wanted to get everything together and make sure the content produced करने वाले was अच्छी quality का हो, and it's something that people enjoy watching. Starting off with what Suyash mentioned right away, Dhoni in his new role, something he posted on Facebook, if I'm not wrong, a few weeks before the IPL kicked off, and उस पे वही बात हो रही थी कि this might be a sponsored post because Dhoni is someone who doesn't use his social media pages at all. We know Instagram में उसकी अभी भी last जो video या whatever post is the retirement post for almost 2-3 years ago. But it turns out it is actually a post about his actual new role, which is not being the captain of CSK. अगर पहला मैच देखा होगा उन लोगों ने, वो वीडियो जरूर देखी होगी धोनी को, the way he points to Rituraj Gaikwad when someone asks him a question, because instinctively you think अरे धोनी कैप्टन है, धोनी से पूछो. But yeah, it's so sad seeing a legend of Indian cricket slowly phase out of the game and do it so silently, I think I must say. कोई धूम धमाका नहीं है, nothing to show for it. He's just said कि भाई, as a player I came in, as a player I'm going to walk out of this franchise, of this game that he's so very much helped India over the last about what 10-15 years, and that he played in, with the finishes he's had, with the captaincy role that he's played, in that 2011 final, 2007 में जो decision थी bowling की. No one's had as big of an impact as MS Dhoni in Indian cricket, if I'm not wrong in saying. Absolutely, absolutely. I mean, in terms of a captain, in terms of a charismatic personality, in terms of training youngsters, in terms of taking bold decisions, in terms for standing up for the players, in terms of having that vision, he's by far the best. India, forget about India. I think in the entire world, and clearly a legend of the game. I don't think there is a better captain than him in cricket. And yeah, CSK, I mean उस बंदे का कोई करिश्मा है, whatever he touches turns gold. मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है it's just his luck, और कभी कभी लगता है it's his decisions, it's his thoughtful risk taking, जिसकी वजह से he has been so brilliant, consistently brilliant. एंड टू 2020 से स्पेकुलेशंस चल रहे हैं कि दिस विल बी हिज लास्ट आईपीएल, दिस विल बी लास्ट आईपीएल। 2023 वाला तो इनफैक्ट इट वाज सेलिब्रेटेड एज अ फेस्टिवल। इवन जितने भी राइवल फैंस, राइवल क्लब्स के जो होम सपोर्टर्स थे, वो भी येलो पहन के आ रहे थे, तो इट वाज अ फेस्टिवल। सो धोनी decided to reciprocate, and here he is in 2024 season, probably now that he has given up the captaincy, which probably means कि ये उसका definitely last season है। अब कि अगर वो 2025 तक चला जाए तो I'll no one will be happier than me, but I think it's highly improbable. So I think, yeah, 2024, let's celebrate Mahendra Singh Dhoni and his legacy. I think you're absolutely right. Last couple of years, made the transition from going and seeing three of the greatest, I think I would say, Indian legends in recent in Indian cricket. I would say Rohit Sharma, Virat Kohli, MS Dhoni.
walking out at coin tosses, that cheer and that roar for them to suddenly going and seeing Hardik Pandya being there, Shubman Gill being there, and Rituraj Gaikwad from CSK, Faf du Plessis as well, and that whole generational shift. And I think someone summed it up very well, where they said, Rohit might not be seen, and this is specifically just for Rohit, I guess, but he might not be seen on the coin tosses, but he might not be seen on the photo shoots when it comes to the captain. But एंड में इंडिया के जो 15 मेंबर्स है तो वही सिलेक्ट कर रहा है, तो वो टेक्निकली सभी टीमों का कैप्टन है. फॉर दोज हु आर अपोजिंग हार्दिक पांड्या बीइंग अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस, आज जिस तरह से जो बू मिली थी उसको ड्यूरिंग द कॉइन टॉस, इट वाज प्रीटी एविडेंट कि भाई, स्पेशली एट अहमदाबाद, चलो यू लीव अ टीम, बट बॉम्बे में मे बी इट्स एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ द लॉयल्टी रोहित शर्मा शोन, but Ahmedabad mein for that title that Hardik got them, he might have expected them कि चलो यार, maybe they'll respect me more than what Mumbai fans would do. But one thing that hasn't worked well for Hardik Pandya is the fact that he's been trying to unite everyone and say कि चलो यार, होता है, but that's completely backfiring for him. आज वो coin toss में भी देखने को मिला, and I think I wouldn't be surprised अगर मुंबई के सारे games में भी he'll struggle to even be able to speak during coin tosses after those boos and those reactions. So I'll be honest, I was a very big Mumbai Indians fan for like until last year. और ये जो डिसीजन अभी आई थिंक लास्ट ईयर थोड़ा सा कम हुआ था बिकॉज लखनऊ की टीम आ गई थी एंड लखनऊ इज माई होम टाउन, तो थोड़ा सा लखनऊ को भी सपोर्ट करने लगा था. बट आई हैव लाइक सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव बीन मुंबई इंडियंस, पहले सचिन की वजह से एंड देन रोहित की वजह से. नाउ मेरे को यार ये जो मूव हुआ, आई डोंट नो व्हाट हैज ट्रांसपायर्ड पीछे से, बट मेरे को तो तीनों फ्रंट पे बिल्कुल समझ नहीं आया यार ये मूव. देखो, हार्दिक पॉइंट पांड्या के पॉइंट ऑफ व्यू से यू टुक दैट बोल्ड डिसीजन टू मूव टू गुजरात विच वाज योर होम टाउन, home state. वहां पे you won in the first season as a captain, you were runner up in the second season, you were almost creating a legacy, and एक आपकी टीम की आइडेंटिटी बनती जा रही थी कि एक not very strong team on paper but still they were grinding out all the results and they were dominating. वो एक legacy बनाते बनाते why would he want to switch back to Mumbai, leaving his home conditions? नंबर वन. रोहित के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं, रोहित, व्हाई वुड रोहित कंटिन्यू टू प्ले अंडर हार्दिक? लाइक ही कैन मूव, ही इज द कैप्टन ऑफ इंडिया. के फैंस से ही स्टार्टेड गेटिंग हेट एंड ऑल. अभी देखो क्या होता है, मतलब एक इधर इट्स अ पीआर मास्टर क्लास की, मतलब लोग हेट करेंगे तो दे विल काइंड ऑफ कम एंड वॉच एंड टू बू हार्दिक पांड्या. तो ये भी हो सकता है, बट मुझे तीनों फ्रंट से नहीं समझ आया यार कि मतलब व्हाई वुड अंबानी डू इट, व्हाई वुड रोहित स्टिल कंटिन्यू, एंड व्हाई वुड हार्दिक पांड्या डू दैट इन द फर्स्ट प्लेस व्हेन ही वाज क्रिएटिंग अ लेगेसी एज अ कैप्टन. सो मुझे ये मूव बिल्कुल समझ नहीं आया, बट आई आई विश मुंबई इंडियंस एंड हार्दिक पांड्या एंड रोहित शर्मा एंड अनंत अंबानी ऑल द बेस्ट. लेट्स सी क्या होता है. दे आर स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम. I think you're right. This could have been a lot better managed with Hardik coming in. कोई नहीं कह रहा कि भाई Hardik moving from Gujarat and to Mumbai is a bad sort of deal. Hardik at the end of the day gets what he wants as becoming the next captain of Mumbai in the next few years. But वो better handle इसलिए हो सकता था कि भाई आप रोहित शर्मा को कहते कि you can continue, but this is a sort of not a warning but a bit of a push to you कि भाई अगले 2-3 सालों में ये transition होना है. Whether you're still part of this team or not, you will have to eventually hand it over to Hardik Pandya, which I think would have been a lot more respectable. And no one from Mumbai or Gujarat as a opposing team would say कि चलो हार्दिक को ये opportunity लेनी नहीं चाहिए थी या लेनी चाहिए थी. So yeah, I think ये completely एक disaster हुआ है. And it's completely a show that Mumbai, and you can see वो admin teams में ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, they've been trying to unite all the fans together कि भाई रोहित शर्मा की वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, that hug between रोहित शर्मा and
हार्दिक पांड्या, which by the way completely forced, भाई कोई ऐसे हग नहीं करता है। भाई मैंने राहुल धोनी गांधी और नरेंद्र मोदी का हक देखा था तुमने? मैं उससे वो ज्यादा रियल लग रहा है मुझे इससे। मैंने रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या से ज्यादा फेक हग आज तक नहीं देखा है। बट या एनीवेज, और उसके बाद भाई आईपीएल किक ऑफ शुरू हो गया। चेन्नई वर्सेस आरसीबी, पहला गेम। पहली तो जस्ट क्विकली अबाउट द पूल, सो फॉर दोज हु डोंट नो, आई थिंक ये लास्ट सीजन से ये रूल चल रहा है, सीजन बिफोर दैट एज वेल। तो दो पूल्स हैं जिसमें पांच पांच टीमें हैं। एंड पूल ए में है मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स एंड लखनऊ सुपर जायंट्स। पूल बी में है सीएसके, सनराइजर्स हैदराबाद, आरसीबी, पंजाब सुपर किंग्स एंड गुजरात टाइटंस. So the way this format works is that each of the team in Pool A will play a team in Pool B twice this whole season, and then they will play a team in their own pool once. So basically, as an example, Mumbai Indians will play Kolkata Knight Riders only once this season, but they'll play CSK and RCB twice each time. So मिल मिला के बेसिकली हर टीम 14 गेम्स खेलती है, एंड एट द एंड ऑफ द डे टेबल एक ही है, वही लीग फॉर्मेट है, एंड देन द टॉप फोर क्वालिफाई फॉर द क्वालिफायर्स, which goes on to the qualifier 1 eliminator, qualifier 2, and then the final as well. For those जिनको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा, उस पर एक वीडियो बना के मैं पोस्ट कर दूंगा, एक शॉर्ट और रील. So watch that as well, and I'll link it above. But before we get into the discussion of the matches जो हर एक टीम ने एक एक खेल लिए हैं, I think when we're recording this, Gujarat and Mumbai are playing it, but we'll have a good idea of what those teams are looking like as well by the time we get to that game. Make sure to leave a like rating, make sure to subscribe, make sure to add us to your playlist. It really helps us a lot in growing. भाई रोज कंटेंट आएगा आईपीएल का, एंड यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनीथिंग. भाई ये जो फेस्टिवल है क्रिकेट का, ये हर हर साल आता ज़रूर है, बट हर साल बहुत डिफरेंट होता है, एंड यू नेवर नो नेक्स्ट ईयर कौन से चेंजेस आ जाए और कौन से प्लेयर्स ऐसे रिटायर हो जाए जिससे इंटरेस्ट आपका पूरा उड़ जाए उससे. बट पहला गेम सीएसके आरसीबी, वेरी क्लोज गेम आई मस्ट से. आरसीबी राइट एट द स्टार्ट मैं देख रहा था कि भाई उनके काफी सारे विकेट्स बहुत जल्दी गिर गए, एंड देन सडनली दे हैड अ बिट ऑफ अ रीबिल्ड विथ दिनेश कार्तिक कमिंग इन towards the end of the innings, trying to help out them and taking them to a bit of a respectable total. And मैं I think commentary सुन रहा था और मैं सोच रहा था यार ये लोग क्यों कह रहे हैं कि इन लोग को 173 is not a good target, because I thought चिपक यार spin pitch है, it's a bowler's pitch, one anything above 150 should be a good score. But credit to Anuj and Dinesh Karthik for sort of carrying the team over the line. Faf and Virat gave them a good start, but कुछ ज्यादा कर नहीं पाया. What do you think about Virat's form, coming back into the games after about, I think if I'm not wrong, 65 days, hasn't हाँ, played आई any थिंक वो sort of थोड़ा सा तो matches. टाइम लगेगा यार. यू कैन गिव हिम दैट, यू कैन कट हिम सम स्लैक ऑन दैट फ्रंट. थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में ही हैज बीन ऑन अ रियल अप इन द लास्ट 5 to 6 वीक्स. सो बट स्टिल मेरे को एक सिक्स याद आता है जो उसने मिड विकेट के ऊपर से मारा था, विच शोज दैट ही डेफिनेटली इज इन टच. इट्स जस्ट दैट T20 फॉर्मेट है यार, तो एक गेम से जज नहीं करना चाहिए. आई थिंक ही वी विल डिस्कस दिस लेटर, बट आई फॉर मी ही इज अ कंटेंडर ऑफ ऑरेंज कैप बैक. Yeah, I completely agree. I think we can get right into it, by the way, with the Virat Kohli orange cap discussion. I know we'll give our predictions in the future in a bit of a time, but realistically, this guy is I know there were some rumors before the T20 World Cup as well, where the people said sorry, before the IPL, where people said कि यार इसको T20 World Cup में maybe खिलाना नहीं चाहिए, he's not fair, he's not capable of leading and taking India over the line. भाई अगर इसको नहीं खिलाया ना, तो T20 वर्ल्ड कप तो भूल जाओ. वेस्ट इंडीज और यूएसए जाने का फायदा ही नहीं, यहीं पे घर पे बैठ जाओ और फॉरफिट कर दो ये टूर्नामेंट, कोई फायदा ही नहीं है. बिल्कुल, आई थिंक यही तो बोला है रोहित शर्मा उसके जवाब. आई एम नॉट श्योर, बिकॉज वो जो वीडियो थी ना वो काफी पुरानी लग रही थी मुझे. इट डिडंट, बिकॉज ही वाज वेयरिंग एन इंडियन किट ड्यूरिंग द आईपीएल सीजन, तो मैंने कहा यार ये ऐसे. एंड देन द इंडियन किट वाज समथिंग दैट आई हैव सीन इन 2015-16, तो वो थोड़ी पुरानी वीडियो थी, वेयर ओके, आई थिंक मैंने मस्ट हैव वीडियो बीन नहीं दैट. देखा. आई रेड इट इन अ रिपोर्ट, तो मेरे को लगा सच होगा मे बी. तो it was one of those things. But looking at RCB squad, क्या लगता है यार कितना दूर जाएंगे? Because I think हर साल आता है RCB fans, and I can see you're wearing an RCB jersey, so no one better to ask than you. कि भाई हर साल का यही है, ए साल कप ना दे, ए साल कप ना दे, भाई कब होने भाई कब तो आ गया है. विमेन्स आईपीएल हमने कवर नहीं किया, बट कब तो आ गया है. तो आई थिंक कब तो इस बार आ गया है. आई होप हमारी मेंस टीम भी काफी आगे तक जाए. बट टॉकिंग अबाउट द टीम इन जनरल, आई थिंक पता नहीं
मेरे को तो टीम में थोड़ा सा बैलेंस की प्रॉब्लम लगी, स्पिनर्स है ही नहीं, आई थिंक हम्म कोई भी स्पिनर नहीं है उनके पास अच्छा। तो कैसे आप मतलब क्या एक ये डिसीजन आपने इसलिए लिया है क्योंकि आपके होम ग्राउंड जो है वो छोटा है और उसमें इजी होता है स्पिनर्स को छक्के मारना, बट स्टिल इंडियन कंडीशंस में स्पिन एक टॉप क्लास स्पिनर के बिना जाना, आई थिंक इनके पास वानिंदु हसरंगा था शायद जो इन्होंने हम्म। ट्रेड कर दिया है। तो वहां पे मुझे थोड़े से वीक लग रहे हैं ये। और बाकी लेट्स सी, मतलब दिनेश कार्तिक स्टार्टेड ऑफ वेल, ही इज इन रेड हॉट फॉर्म, बट गिवन हिज एज एंड he does commentary more than playing cricket throughout the year. तो let's see in the long run in 14 games कैसा करता है दिनेश कार्तिक, and because they completely rely on him as a finisher and of course अनुज, तो वहां पे अगेन थोड़ी सी वीकनेस है। आई स्टिल थिंक, आई थिंक कैम ग्रीन भी आया राइट उनकी टीम में, हम्म। तो कैम ग्रीन और विराट कोहली पे बहुत हद तक डिपेंड करेगा, क्योंकि कैम ग्रीन कम्स इन द मिडिल और डुप्लेसिस फॉर श्योर यू आर गेटिंग 400 runs from Duplessis in 14 games. That is given. Don't even worry about it. But Virat Kohli and Cam Green would decide कि बैटिंग में ये कहाँ तक जाते हैं आरसीबी। Yeah, you're right. वो जो imbalance है ना वो clearly first game में दिख गया है. They have very good batting powers and big hitters as well. I think we didn't get to see, if I'm not wrong, Glenn Maxwell, because I think they Right. had, they had a few overseas players already in this squad, which is a bit of a trouble for. We actually did see Glenn Maxwell. Sorry, Yeah, I'm he wrong. was out. वो आउट हो Yeah. गया था जल्दी, बहुत Hmm. जल्दी, हाँ. But realistically, you look at that batting firepower and that top four, top five, up until Dinesh Karthik to a certain degree, when you've got big names like Virat Kohli, Faf, and then Rajat Patidar in there as well, who's capable of hitting it big. उसने भी कुछ 2-3 centuries मारी हुई हैं. Glenn Maxwell, Cameron Green, and then Dinesh Karthik and this Anuj Rawat guy coming in as their sort of young player, an impact player that they can have. You're right, they're missing that bowler, that specialist, if you want to say. Karan Sharma उन्होंने लिया था जो they thought would be good, but again, yesterday we saw he got off to a very bad start. 12 की economy. Mayank Dagar is someone we can look into because he's only given, his economy was really good, but wickets कोई नहीं pick कर पा रहा था except Cameron Green. So maybe Cameron Green is that good buy for RCB. बहुत सारे मीम्स बन रहे थे आईपीएल से पहले कि भाई कितना का खरीदा, ये वो क्या हुआ, पता नहीं किस बात के लिए ले लिया इतने ओवरसीज. बट अदर देन मोहम्मद सिराज, जो आई थिंक ऑन द डे वो भी नहीं काम करे, they don't really have an answer to any sort of condition. जहाँ तक मुझे ये लग रहा है, जब मैं कोलकाता में 193 देख रहा हूँ, चिपक में 173 देख रहा हूँ बनते हुए, मुझे ये लग रहा है कि भाई सारी पिचेस जो हैं इस बार वो बैटिंग हैवी पिचेस हैं, बॉलर्स के लिए फेवरेबल है ही नहीं. ईडन गार्डन्स तो हमेशा से एक ऐसी पिच रही है जहाँ पे सुनील नारायण और ये लास्ट फ्यू सीजन से श्रेयस शर्मा एज वेल, दिस यंगस्टर, दे हैव डोमिनेटेड. ऐसे 8 ओवर होते थे स्पिन के, 12 ओवर स्पिन के ऐसे होते थे जहां बैटर को लिटरली यू हैड टू डिग देमसेल्व्स आउट ऑफ व्हाटएवर सिचुएशन देयर इन, जो कि इस सीजन देखने को मिल नहीं रहा है. सो बॉलिंग इज गोइंग टू हैव टू बी डन बाय पीपल हु आर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड, कि भाई चलो ये नहीं काम कर रहा, लेट्स ट्राई दिस, ये नहीं काम कर रहा, लेट्स ट्राई दिस, व्हिच आरसीबी डू लैक. बट एट द सेम टाइम इट्स आरसीबी. मेरे हिसाब से ये टीम कुछ भी कर सकती है, या तो ये लास्ट आ सकते हैं या तो ये फर्स्ट आ सकते हैं, और इनका कोई भरोसा First. नहीं है. एंड इनकी Fingers हमेशा से crossed. यही बैटिंग जो है वो एक ऐसी फायर पावर रही है कि दे विल लीव अदर टीम्स वंडरिंग कि भाई 170, 180, 190 इनके रेगुलर स्कोर्स हैं. तो व्हेन यू स्कोर दैट, it becomes a bit defendable, and yeah, it's all about just making sure you sort of make your bowling changes at the right time. You look at previous game जो CSK के against था, उसमें I think they had about 7 bowlers tried out in about 20 overs, जो कि which meant that only one bowler itself, or two if you want to add Alzari Joseph into that mix as well, finish their overs. So maybe it's still early, they want to experiment and see क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, but at the same time they need to realize कि भाई चलो, we need to stick to this bowling plan that we've got. Introduce Glenn Maxwell as well as a spinner, if with Mayank Dagar maybe if needed. They've got good pacers. अगर देखा जाए तो वही Alzari Joseph is a good pacer. Siraj has got experience. Yash Dayal is a youngster coming in who can do some damage as well in these Indian pitches. So I look at this team and I say कि भाई top four level है, इसमें है power top four में आने का. I don't know if they've got it what it takes to win it yet. It's too early to call that, but I think top four team तो लगती है. Yes, definitely top four.
कॉन्फिडेंस इन कार्तिक, ज्यादातर तो वो कमेंट्री करते हैं, तो मतलब वही है। एंड फास्ट बॉलिंग में अगेंस्ट सिराज है, अलजारी, आई डोंट नो, मतलब वही है थोड़ा सा। बैटिंग, इफ आई हैव टू सम दिस टीम, इफ दे हैव टू रीच इन टॉप 4, दे हैव टू रिलाई ऑन देयर बैट। एग्जैक्टली, एंड लकीली फॉर देम वो पिचेस हैंगी यहाँ पे बैटिंग ये अच्छे से कर सकते हैं, बट उनका इट्स ऑल ग्राउंड अबाउट भी वैसे ही है। being able to defend those batting scores as well. 173 is quite a respectable score at Chepak, and the fact that they weren't able to defend it shows कि भाई उनकी बॉलिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट चाहिए अगर इनको लगता है कि कुछ ये कर हम्म। सकते हैं इस आईपीएल में. ऑन द अदर हैंड, ex MS Dhoni की now current Rajat Patidars team CSK, भाई as always reliable. They've beat RCB now at home for the last I think 16 years. The RCB has never won against Chennai at Chepak. So that is a team to look at and say कि भाई कौन है जो इन्फॉर्म नहीं. Everyone scored above 20 runs. Everyone अ- did their part. अगर आपकी टीम में नंबर 3 पे अजिंक्य रहाणे आके 150 के स्ट्राइक रेट से रन बना जाता है, तो आप समझ सकते हो धोनी का क्या ऑरा है, जो मैंने शुरू में बात करी थी कि धोनी का एक करिश्मा है। मतलब जो अजिंक्य रहाणे, जिसको स्लो स्लो बैटिंग के लिए टेस्ट टीम से निकाल दिया, समझ रहे हो आप, स्लो बैटिंग के लिए टेस्ट टीम से निकाल दिया, वो T20 में आके 150 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है और कंसिस्टेंटली बना रहा है। लास्ट सीजन में तो मतलब ऐसा मेरे को याद है कि अजिंक्य रहाणे को ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, क्योंकि कोई इंजर्ड हो गया था, आई एम नॉट श्योर कौन इंजर्ड हुआ था, एंड देन ही काइंड ऑफ स्कोर्ड एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ सम 250 और समथिंग, एंड फिर उसको ड्रॉप करना ही मुश्किल हो रहा था। तो ये तो मतलब करिश्मा है महेंद्र सिंह धोनी का। आई नो कि अभी ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन है, एंड धोनी स्लोली ट्राइंग टू ट्रांजिशन थिंग्स, बट अभी भी वो धोनी का जो टैक्टिशियन मास्टर क्लास है। आई थिंक अभी भी वो जो उसकी स्टंप के पीछे से शूटिंग है या विकेट कीपिंग है, दैट इज स्टिल बेटर देन आवर लखनऊ सुपर जायंट्स के लोकेश राहुल, तो जो कि करंटली अभी आधी, आई थिंक धोनी की आधी एज के हैं या 3/4 एज के हैं, आई डोंट नो, बट धोनी की मतलब अगर आप देखो लास्ट बॉल जो थी आरसीबी की बैटिंग में, उसमें धोनी ने क्या निशाना मारा है। मतलब कौन कहेगा कि ये बंदा 40 साल और वट एवर 41 का होने वाला है। तो आई थिंक बहुत वही तो यार, मतलब यूएसपी क्या रहा है सीएसके का, दे हैव ऑलवेज रिलायड ऑन दे बैक्ड द प्लेयर्स टैलेंट्स। मतलब ये पिछले शुरू से इनका यूएसपी रहा है कि दे विल नॉट गो फॉर बिग नेम्स, बिग स्ट्राइकर्स, क्रिस गेल, आंद्रे रसल नहीं चाहिए उनको। दे हैव अ कोर्स, मतलब उन्होंने तो आई थिंक चेतेश्वर पुजारा को भी ले लिया था। तो दैट इज द काइंड ऑफ टीम दे आर। मतलब जो हमारे पास गिवन सेट ऑफ प्लेयर्स हैं उनको हम बैक करेंगे। अभी एक आई थिंक रचिन रविंद्र के फॉर्म में दे हैव ब्रॉट इन दैट एक्स फैक्टर हु विल Hmm. आई थिंक बी वन ऑफ द राइजिंग स्टार्स ऑफ, इफ नॉट द राइजिंग स्टार ऑफ दिस सीजन। आई थिंक ही इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर, एंड डेफिनेटली जैसे हमने आरसीबी के लिए कहा था, मैं तो कहूंगा सीएसके विल also be a top 4 contender, very strong contender. I think they can even go to all the way to the finals. You're right. I think one move they made in the auction was buying Rachin Ravindra, and that could be a game changer for them. You see, SK has always been that team dubbed as कि भाई they look at the market and say कि जो सबसे 11 oldest players हैं उनको उठा लो, और then will win the IPL with them. But nurturing Rachin Ravindra, him playing again, under MS Dhoni. He's got his own teammate Daryl Mitchell as well in that team. He's Hmm. got so many players to learn from that this is going to be an experience for him that he will, admire throughout this whole IPL. Plus, I see him making that impact for CSK and being someone who CSK rely on in the following years to come when slowly these players transition out. When we talk about Ajinkya Rahane, when we talk about MS Dhoni, these players, when they phase out of cricket, you need these youngsters to be able to step up and show up, and that's why Dhoni's made that quick call of कि भाई रजत पाटीदार को आप कैप्टन बनाओ, अभी मेरे साथ है, I'm here to help him out. You've got someone like Rachin Ravindra coming in as well. So they're not only just thinking about this season, but they're thinking about maybe 3, 4, 5 years from now, where this team needs to be guided by those youngsters who are in this team today, and not by them, not by the senior players. One player I want to mention in this, before we move on to the other teams, Mustafizur Rahman. What an amazing bowler he was that day. 4 overs में 4 wickets, 7.25 की economy, the way he bowled. And to think that he was stretchered off a few weeks ago against Sri Lanka, and he was almost certain not to play the IPL, and to come back and do this sort of performance. He's a bowler that they can rely on, and certainly, as you said, by CSK top 4 भी बहुत ज़्यादा बता रहे हैं हम लोग, top 2 में भी हो सकते हैं. Very much likely to be in that top 2 position that they've always been in throughout this sort of. यार एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे मैंने एनालाइज किया स्क्वाड की कंप्लीटनेस को आरसीबी, वैसे ही मैं कहना चाहूंगा सीएसके के बारे में। आई थिंक उन्होंने, उनकी अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो उनकी बॉलिंग
भी काफी कंप्लीट है. लाइक मुस्ताफिजुर इज दैट एक्स फैक्टर फ्रॉम लेफ्ट आर्म फास्ट पॉइंट ऑफ व्यू. दीपक चहर एवरीवन नोज हाउ डेवेस्टेटिंग ही कैन बी. और उनके पास आई थिंक तुषार देश पांडे भी है, राइट. और तीक्ष्णा तो है ही उनका, मतलब इट्स लाइक हम्म। श्रीलंका उसका होम ग्राउंड नहीं है, उसका होम ग्राउंड चेन्नई है. और उसका मेंटर कोई जयवर्धने नहीं है, उसका मेंटर महेंद्र सिंह धोनी है. तो बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टीम बहुत स्ट्रांग है, और बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रचिन रविंद्र और डैरिल मिचेल की टीम में आने से आई थिंक वो तो बहुत ही, मतलब एक जो डेवेस्टेटिंग, जो मैं बोल रहा था कि इनके पास डेवेस्टेटिंग बैट्समैन नहीं होता है, मतलब ओवरसीज वाला, वो आई थिंक डैरिल मिचेल वो कमी पूरी कर सकता है. कि जो मतलब एकदम ही अचानक से 6 ओवर में 100 रन चाहिए, जो काम कल क्लासन ने किया था, राइट, कर नहीं पाया हम्म। बट ऑलमोस्ट कर दिया था. वो काम करने वाला जो बैट्समैन है, वो कभी ज्यादातर ज्यादा नाम अगर आप याद करो तो नहीं आएंगे सीएसके में. वो काम आई थिंक डैरिल मिचेल कर सकता है. तो आई थिंक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम सीएसके, highly likely to to be able to retain the title. Yep, completely agreed. They've got a good mixture of youngsters as well as senior players to make this squad. For me, again, yep, you're right. Top two, top 14 guaranteed है ये alongside RCB, I think. मेरे तो top four बहुत ही clear थे जब से auction हुआ तब से, because I didn't see much of these leading up to the IPL T20 games जो plus there was a PSL as well, so a lot of these players were playing in that, तो मैंने कहा यार उसको भी देखता हूँ ज़रा. बट वो काफ़ी clear था after the auction कि भाई क्या हो सकता है. Moving on swiftly to the next game that happened yesterday, Delhi Capitals and Punjab Super Kings. But Delhi Capitals' biggest win for them would be that the fact that Rishabh Pant is back. That is one player everyone has been looking forward to see. Quite an emotional moment for him walking back onto the field. उसने इंटरव्यू में भी कहा था कि भाई I felt very nervous. I felt like I was returning back as a debutant playing this game. So, the sort of transition he's gone through over the last almost year or so, since that horrific accident, I must say, is incredible to see. And I think more than that loss, Delhi will be happy that bhai, Rishabh Pant is playing well. He's started off really well, got caught and towards the end, but he'll be someone they'll be heavily relying on alongside David Warner this season. For sure, I think ऋषभ पंत की थोड़ी सी बात करूं तो what a recovery. Like first of all, miracle that he's still alive, and all our prayers were his. The entire country was praying for him. I think जिस टाइप की इफ यू रिमेम्बर युवराज सिंह की जो न्यूज आई थी, उसी लेवल का था ये. बिकॉज ऋषभ पंत was in his prime when this happened, and now having that grit, having that determination to be able to recover back to full fitness, to be able to play at the highest level, incredible, incredible. And he thoroughly deserved the reception that he got yesterday. The emotions that were coming out. Probably I don't see him being the highest run getter or the most impactful player for DC this season, because slowly his form, that is what I feel. Obviously I can be wrong, आएगा. But just talking a bit about the opening pair of DC, so Mitchell Marsh and डेविड वार्नर, जिनका अगेन लास्ट सीजन उनका भी हो सकता है, वी नेवर नो. तो ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, उनका ही मतलब एक तरह से टॉप ऑर्डर है यार, मिचेल मार्श और डेविड वार्नर. तो क्या बोले भाई, हमेशा से, मतलब अगर आप पिछले 4-5 साल देखो, तो दिल्ली कैपिटल्स हैज बीन बैटिंग उनकी हमेशा, मतलब यू सी द बैटिंग ऑर्डर एंड यू सी लाइक भाई ये टीम 200, कौन सा, कैसे इस टीम को 200 मारने से हम रोक सकते हैं. और इस बार भी दे आर लिविंग अप टू द स्टैंडर्ड्स. जिस टीम में पृथ्वी शॉ बेंच पे हो, उस टीम पे आप मतलब वो देख सकते हो उनकी क्या बैटिंग ऑर्डर है. एंड देन यू आल्सो हैव अक्षर पटेल एंड पीपल लाइक ऋषभ पंत आउट देयर, एंड ट्रिस्टन स्टब्स इज अ शाउट. आई थिंक ही कैन बी एन एक्स फैक्टर देयर. तो बहुत शाई होप ऑफ कोर्स इज अनदर वन. सो आई थिंक बैटिंग इज गुड फॉर देम ओवरऑल. आई थिंक या डीसी वही है, दे विल नीड दैट शेयर ऑफ लक. दे हैव बीन सॉर्ट ऑफ अनलकी थ्रू आउट द आईपीएल अक्रॉस सीजन्स. तो अगर वो लक इनके साथ रहता है तो दे डू have a chance for top four, but right now I don't see them, qualifying to the top four. Yeah, you're right. Absolutely agree with you on that because I think Delhi has a balanced squad. They've got the skills, they've got the people to do it, but at the same time, it's always been the case of luck for them where it comes down to the last few games जहाँ पे they need to win by a certain amount of runs, they need to get this win, और फिर दूसरी टीम हारे तो ऐसे करके. And in those sort of situations, as a team, you also feel कि यार इस situation में होना ही नहीं चाहिए था, and the fact that we're in this situation, maybe we don't deserve that top four position. So I'll say the exact same thing for Delhi. You've summed it up quite well. In terms of Punjab, they've got Shikhar Dhawan captaining themselves again. Good batting lineup with Johnny Bairstow, Sam Curran.
जैसे उस दिन उसने जिस तरह से खेला था भाई, ही ऑलवेज लव्स प्लेइंग इन इंडिया, एंड लियम लिविंगस्टोन एज वेल, दीज बोथ enjoyed that new stadium feel that they were getting from Punjab. And realistically this is also a team which looks strong, but again for me ये एक ऐसी टीम नहीं लगती जो टॉप फोर में आएगी. It's one of those filler teams if I must say, where because IPL में 14 टीमें हैं तो ये है इसमें. It's kind of that. Maybe because कोई एक बहुत बड़ा superstar name है नहीं. Yes, I respect Shikhar Dhawan. Yes, I respect the other players I mentioned. But at the same time कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो इम्पैक्ट ऐसा कर दे कि भाई आपको 3-4 गेम्स जिता दे, गिव यू दैट सर्टेनिटी के यस वी विल बी इन द टॉप फोर. बॉलिंग इनकी काफ़ी अच्छी है, मस्ट से कि रबाडा इज़ अ गुड ऑप्शन. They've also got Arshdeep Singh, Khalil Ahmed has got Khalil Ahmed to उधर Delhi का है, हर्षल पटेल। but Harshal Patel I must say, I was gonna say, and then you've also got Sam Curran. तो realistically yes, bowling lineup अच्छी है, but again for me it's just that filler team. मुझे नहीं लगता ये कहीं पे आगे जाने वाले हैं ज़्यादा. Granted yes, they did win यार इनका pretty भी well. सेम, एग्जैक्टली सेम दिल्ली वाला एनालिसिस ही है। आई थिंक दे हैव बीन वेरी अनलकी। प्रीति जिंटा को रोते देखने की आदत हो गई है यार। वीर जारा में जितना नहीं उसको रोते देखा उतना आईपीएल में रोते देख लिया है। तो आई थिंक या दिस सीजन आल्सो आई 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 एम अफ्रेड शी विल एंड अप जस्ट बाइटिंग ऑफ ऑल हर। Yeah, I completely agree with that. But moving on swiftly to a game where two of the most expensive IPL players this season were playing, Mitchell Stark and Pat Cummins. Kolkata Knight Riders took on Sunrisers Hyderabad. भाई स्टार्क की अगर बात करी जाए तो स्टार्क को तो कोई अंदाजा ही नहीं था क्या हो रहा है. स्टार्क ने तो भाई उसकी हर बॉल, इफ आई वाजंट रॉन्ग, मैंने देखी थी, वो 1 लाख की बॉल थी, समथिंग लाइक दैट, 1,21,000. और भाई दो दो मैं लाइव देख रहा था, अपने भाई से चैट कर रहा था एंड दो मीम हमने डिस्कस करे। एक मैंने बोला 26 करोड़ पानी में गई छपैक, ठीक है। दूसरा मैंने बोला 26 करोड़ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर में 26 रन दे दिए उसने। भाई So, उसने 4 छक्के जब एक ओवर में कहा मारा तो गौतम गंभीर के ऊपर कैमरा गया. मैंने कहा भाई ये बंदा आज इसको ड्रेसिंग रूम में खा जाएगा, अगर गेम जीत भी गए तब भी खा जाएगा. तो वो वही सिचुएशन थी भाई. अगेन केकेआर के साथ यही है. बहुत से ऐसे सीजन्स. पहली बात तो मुझे एक सबसे बिगेस्ट जो उनकी एक वो लगती है, चलो मैं केकेआर का बहुत बड़ा फैन था पहले से, मैं आज भी हूँ, मतलब डीप डाउन यू लाइक ठीक है यार, आई स्टिल वांट देम टू डू वेल इररिस्पेक्टिव ऑफ कि चलो जनरली मैं अब सब सारी टीमों को देखता हूँ इधर उधर. I'm just enjoying the IPL more than a certain team. But you look at their moves in the last few years and you go यार शुभमन गिल को पता नहीं किस बात के लिए उन्होंने रिलीज किया था, क्या सोच के रिलीज कर रहे थे. This he could have been the future of this franchise. Leading on from Gautam Gambhir would have been the perfect set in stone for Kolkata Knight Riders. उन्होंने उसको जाने दिया. They still hold on to Andre Russell and Sunil Narine, and don't get me wrong, दोनों ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस करा है उस दिन, but they're not very consistent. भाई रसल लास्ट फ्यू सीजन्स आप देखोगे एक दो बहुत अच्छी इनिंग्स हैं उसकी, एंड येस बॉलर्स आर स्टिल स्केर्ड ऑफ हिम कि भाई वो कुछ भी कर सकता है. बट आई डोंट वांट समवन हु कैन जस्ट कम इन एक दो गेम्स में हाफ सेंचुरी मार दिया, वेरी क्विक 30, वेरी क्विक 40 रन्स, एंड से कि भाई आई वाज वर्थ द मनी दैट दे पेड फॉर. तो फॉर मी केकेआर इज दैट team which right now looks like has the possibility of making a top four, but also I wouldn't be surprised if they don't make it to the top four. They do have the talent, they do have the skill set. Phil Salt, that replacement for Jason Roy हम्म, has turned out to be good, and they've got the biggest hitter of them all, Rinku Singh, in there as well. But middle yeah, order जो 50 इनका है ना रन वो में। बड़ा unreliable है, I think in general for me. हम्म। तो केकेआर एक ऐसी टीम लगती है जिनके पास टैलेंट है, एक्सपीरियंस भी है, प्लेयर्स बहुत अच्छे अच्छे ऑक्शन में खरीदे हैं विद मिचेल स्टार्क एंड दैट द मनी दे स्प्लैश्ड ऑन हिम. बट उस 26 करोड़ के सिर्फ अभी 26 रन ही आए, 26 विकेट तो आने चाहिए. भाई आप मेरे को ये बताओ, रिंकू सिंह मतलब हाइट्स ऑफ मिस मैनेजमेंट क्या है। मतलब भाई मेरे को ले ले यार, एक्सपर्ट केकेआर का, मैं बेटर कर लेगा उधर जूही चावला की बेटी से। उधर मतलब यार क्या हो रहा है। 50 लाख में रिंकू सिंह है, 26 करोड़ में स्टार्क लिया है। और 26 करोड़ में स्टार्क लाए तुम, पैट्रिक कमिंस को क्यों जाने दिया भाई? मतलब क्या कमी थी पैट्रिक कमिंस में? क्या दिखा तुम्हें? पैट्रिक कमिंस तो चलो ऑलराउंडर है, स्टार्क तो उतना अच्छा ऑलराउंडर भी नहीं है। पैट्रिक कमिंस कैप्टन है, स्टार्क तो कैप्टन भी नहीं है। मतलब किस लिए लाए हो 26 करोड़ में स्टार्क को? मेरे को तो पर्सनली नहीं समझ आया। क्या आपको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर चाहिए था इसलिए लाए हो? आई डोंट नो क्यों लाए हो, क्या किया आपने। तो भाई मतलब ग्रॉस मिसमैनेजमेंट। गौतम गंभीर बोल रहा है कि शाहरुख खान ने मेरे को ब्लैंक चेक लिख दिया तो उस वजह से मैंने अपनी पॉलिटिक्स वगैरह सब छोड़ दी, लखनऊ भी छोड़ दिया, कॉन्स्टिट्युएंसी भी छोड़ दी, मैं सीधे मतलब कुर्बान हो गया एसआरके के लिए। मतलब क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है? आई थिंक प्लेयर्स ऑन फील्ड कुछ प्रूव कर दें तो कर दें, बट कल जीत गए ओके,
बट जिस मैनर में जीते हैं, आई थिंक इतना नो वन क्लोज वुड जाना लाइक नहीं दैट। चाहिए था गेम। नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। एंड यू नो दैट कैच फ्रॉम सुयश शर्मा, आई वुड से हेड्स ऑफ टू सुयश शर्मा। ही हैज बीन, मेरा हमनाम है यार वो, एंड रियली प्राउड ऑफ हिम, द वे ही हैज काइंड ऑफ बीन अ स्टार लास्ट सीजन एज वेल एज दिस सीजन। सो मतलब ओवरऑल आई थिंक केकेआर अगेन कैन गो टू टॉप 4। प्लेयर्स वगैरह की वजह से आई वुड से शुड गो टू टॉप 4, बट अगेन द मैनेजमेंट और जो डिसीजंस वो लेते हैं, वुड नॉट बी सरप्राइज इफ दे डोंट क्वालिफाई। Yeah, I think generally they're a good team, but they're as good as Sunrisers Hyderabad in my opinion. दोनों एक ऐसी टीम है जो मेरे लिए अभी I think set in stone top four नहीं लगती है मुझे, but at the same time are both teams that can actually make it to the top four. They've got the skill sets. Pat Cummins को announce किया as a captain. They've got experience in Mayank Agarwal and Rahul Tripathi coming in, and then they've also got big hitters with Aiden Markram, Henrik Klassen. उसकी innings देख के जबरदस्त मजा आ गया था उस दिन. And then a few youngsters as well with Shehbaz Ahmed and Abdul Samad. So you look at their team and you think, okay, bhai, they're very much similar to Kolkata. They're not as bad as I guess Delhi or Punjab might end up being towards the end of the season. But for me, these are teams that will fight for that top four spot. या एक दो points मुंबई गुजरात लखनऊ से स्टील करेंगे, जिसमें फिर वो जो एक लास्ट गेम्स में जाके जो एक एक पॉइंट का डिफरेंस होता है या नेट रन रेट से जो होता है, जो टॉप फोर में क्वालिफाई करेगा, वो ये एक ऐसी टीम लगी। दे डोंट सीम टू मी एज अ CSK या आरसीबी who will definitely be in that top four. And I know मैं आरसीबी के लिए बहुत ज़्यादा होप्स लगा के रखा हुआ हूँ, स्पेशली मैंने जितनी बॉलिंग की उनकी तारीफ करी है, बट स्टिल these teams are very much similar in that sense where they will fight for that top four position. Granted they might not get it at the end of the day. मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ। आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि एसआरएच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। मतलब पिछले सीजन भी स्ट्रॉन्ग थी, बट आई थिंक उनकी जो ओनर है काव्या, शी लुक्स, आई थिंक शी इज द नेशनल क्रश। बट वही है कि उनका थोड़ा सा लक शायद काम नहीं करता था। लक के लिए दे ब्रॉट इन पैट्रिक कमिंस एंड डैनियल विटोरी का कॉम्बिनेशन, जो वर्ल्ड कप विनिंग कॉम्बिनेशन है। एनीथिंग दे टच टर्न्स गोल्ड इन द पास्ट 2 years। तो लक के लिए उनको लेके आए। एंड आई थिंक जो बैटिंग ऑर्डर तुमने डिस्क्राइब किया, आई थिंक आई वुड कंप्लीटली अग्री कि बैटिंग ऑर्डर बहुत ही अच्छा है। प्लस उनका बॉलिंग में भी काफी फायर पावर है। भुवनेश्वर कुमार, आई थिंक नटराजन, कमिंस, मार्को यानसन, मरकंडे हु वाज मुंबई इंडियन सेंसेशन, शाहबाज अहमद। तो बॉलिंग फ्रंट पे भुवनेश्वर कुमार जो कि स्टॉल वॉट है इंडियन, उसका वही उनको स्पीयर हेड करता है। एंड दे हैव सम गुड बैकअप्स एज वेल। बैटिंग में मार्करम, रिमेंबर कल उतना फायर नहीं किया। तो आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड स्क्वाड, एंड विद द टैक्टिकल जीनियस ऑफ डैनियल विटोरी एंड पैट्रिक कमिंस, I see them going all the way through to top 4 and maybe to the final as well. Although again बोलना चाहूंगा कि काव्या का जो लक है वो आई थिंक इनके फेवर में नहीं जाता है। और कल वही हुआ यार, 5 बॉल पे 6 रन आप कैसे नहीं बना पाए यार। मतलब आई इट वॉज इट सो वाज सो वन ऑफ दो डेवेस्टेटेड। सिचुएशंस जहाँ पे वही बैट्समैन को लगा कि यार मैं इतने अच्छे फॉर्म पे हूँ, अगर मैं एक और मारूंगा छक्का ही जाएगी, आउट तो होना नहीं है। हाँ, और यस, फिर वहां से वो एक रिदम शुरू हो गई। फिर सुयश गॉट अनदर, सुयश शर्मा ने एक कैच पकड़ी, फिर वो एक क्लासन आउट हो गया, एंड सडनली यू हैव गॉट टू टेल एंडर्स जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है फिनिशिंग का, एंड ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फॉलो दैट वाइड लाइन एंड जस्ट फॉलो योर इंस्टिंक्ट। एंड वही हुआ जो द वे KKR bowled them out and won that game. And वही होता है ना भाई, आईपीएल इज वेरी फाइन मार्जिन। ये 2 पॉइंट्स अभी यस। सनराइजर्स को आगे जाके बहुत अफेक्ट कर सकते हैं जब वो नेट रन रेट पे बात आए। मे बी दिल थिंक ऑफ देमसेल्व्स कि यार यार वो केकेआर वाला गेम अगर सेंसिबली खत्म करते ना तो फिर वो कुछ कर सकते थे उस गेम में, and आज वो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मूविंग ऑन टू टुडेज फिक्सचर्स, जो आज के फिक्सचर्स हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, वेरी हाई स्कोरिंग गेम्स अगेन। आई थिंक द एवरेज स्कोर मैं देख रहा हूँ अभी तक सारे गेम्स का मिला के, आई एम सीइंग all of them are above 170 minimum. And even this Gujarat and Mumbai one, अभी भी मैं देख रहा हूँ 11 ओवर में 100 बन चुके हैं। तो this is going heading towards that same trajectory, following the route that we talked about कि भाई सारी pitches जो हैं बैटिंग heavy pitches हैं भाई। Talking about Rajasthan Royals, their marquee player या कह लो या the always reliable संजू सैमसन, भाई जितना डिसरिस्पेक्ट उसको इंडियन क्रिकेट से मिला है उतनी रिस्पेक्ट उसको राजस्थान रॉयल्स से। द वे दिस गाय प्लेज एंड जस्ट गोज अबाउट हिज गेम is incredible to see. They've got young talent in Yashasvi Jaiswal. They've got experience in Butler, big hitters like Hitmyer and Ryan Parag. So they've got it all. And bowling maybe bhai, they've got Avesh Khan, Trent Bolt, अश्विन।
Ashwin and Yuzvendra, who's the highest wicket taker in IPL history. So संदीप शर्मा, द यॉर्कर किंग. exactly. तो you look at this squad and you think कि भाई these guys have a chance in that top four. अगर मैं इनको रैंक करता हूँ तो मैं generally इनको KKR से ऊपर रैंक करता हूँ, not because of the big names but because यस. what each of these individuals are capable of doing. KKR as a team might perform better कि भाई चलो आज उसने effort डाल दी, आज उसने effort डाल दी, but as an individual, looking at individuals, this team looks a lot stronger than KKR, which is why जो मैंने reasoning दी थी for Sunrisers as well as KKR कि भाई maybe they might have a chance, but at the same time, I do rank maybe Rajasthan a bit higher in that sense नहीं, against आई those. आई कम्प्लीटली अग्री. आई थिंक राजस्थान जब से ये बटलर, जायसवाल एंड दीस पीपल, राइट, अश्विन, चहल, ये सब इनकी टीम में आए हैं ना, संजू तो हमेशा से था, तो तब से दे हैव बीन दैट कंसिस्टेंट. जैसे कि अगर मैं इंटरनेशनल में देखूँ तो जैसे न्यूजीलैंड है, दे ऑलवेज रीच द सेमीफाइनल्स, उसी टाइप की टीम है यार. Hmm. राजस्थान, यू विल ऑलवेज सी देम इन टॉप फोर. Hmm. दे आर गिवन, दे आर वन टीम दैट इज गिवन इन टॉप फोर. वही है, जीत की और बात वो है. एक ऐसी टीम है जिस जो किस कोई हाईली रेट करता नहीं है, हाँ. आपको आईपीएल के स्टार्ट से पहले इतनी टीमों के बारे में बात होती है कि भाई आरसीबी थे, सीएसके थे, मुंबई के को ये वो, एंड देन हम्म. राजस्थान इज जस्ट दैट टीम के भाई कोई बात नहीं कर रहा, बट एट द सेम टाइम दे जस्ट डू देयर वर्क साइलेंटली एंड मूव अप द ऑर्डर टू द टॉप फोर. यस, यस, एग्जैक्टली. और उसका बहुत बड़ा रीजन है यार कि दे हैव ऑलवेज रिलाइड ऑन एन इंडियन गाय टू बी द कैप्टन हु नोज एवरीवन. दे हैव जॉस बटलर का एक्सपीरियंस फॉर कैप्टनसी. स्पिन डिपार्टमेंट में दे हैव अश्विन हु इज ब्रिलियंट टैक्टिशियन, ग्रेट क्रिकेटिंग ब्रेन. दे हैव गॉट यशस्वी जायसवाल. दैट ओपनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ जायसवाल एंड बटलर इज समवन, इज वन विच एनी टीम वुड वांट. तो मतलब मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है यार. मतलब लाइक दे हैव देन सैमसन, पराग तो भाई ठीक है. सुनने हाँ. सुनने में तो ये भी आया था कि अश्विन को ऑक्शन में लेने के बाद उन्होंने अपना टैक्टिशियन फायर कि भाई उन्होंने कहा कि जब हमारे पास कोई बंदा है जो 300-400 आवर्स वीडियो देखता है क्रिकेट की, तो भाई क्या करना है टैक्टिशियन के लिए, बनाता तो भी है. हाँ एग्जैक्टली, तो उन्होंने कहा कि भाई टैक्टिशियन साहब आप थोड़ा साइडलाइन हो जाओ, हमारे पास एक सीनियर टैक्टिशियन तो डू यू वही डू यू है. थिंक बॉलिंग में, आई थिंक दे हैव द बेस्ट काइंड ऑफ बॉलिंग अटैक? क्योंकि अब मैं गिनाता हूँ: अश्विन, हम्म. Chahal, right? Ye spinner, probably the best spin duo. हम्म. Then you have Sandeep Sharma, who is the death king. You have Avesh Khan, who can be very good at the death, great fast bowler. You have Trent Bolt, who can be kuch bhi, matlab he is तो हम्म. मतलब goat. And then you have Nandre Burger, who can be the X factor. So do you think bowling में they are one of the strongest in the entire competition? आई थिंक उनके पास पता है क्या, वो जो एक कॉम्बिनेशन होता है ना बॉलिंग का, वो परफेक्ट. दे Hmm. हैव समवन एज यू सेड, युजवेंद्र चहल जो हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द आईपीएल फॉर अ रीजन है. वी हैव एक्सपीरियंस स्पिनर्स इन फ्रॉम इंडिया लाइक अश्विन, जडेजा and all of these guys playing, Sunil Narayan as well from outside of India, but Yuzvendra Chahal, the way he's been performing in IPL seasons ना, वो it's incredible to see. तो एक तो पहली बात तो उनके पास वो है ही, they've got the tactician and Mr. Ashwin Ravichandran Ashwin with them as well. And you're right, with Bolt is experience कि भाई उसके पास इतना experience है bowling का, and Nandre Berger, the upcoming sort of talent we're seeing in cricket from South Africa, is great to see. तो yeah, you're right, absolutely right in saying कि भाई balance बहुत अच्छा है, and you look at the bowling attack every team has got, and they will be up there right on the top, in being able to cause an impact and digging themselves out of those situations. Because हम लोग आरसीबी की बात करते हैं कि they will be top four because of their batting, but in the end of the day it's the bowling that wins you game. It's not just the battings. भाई टेस्ट मैच अगर आपको जीतना है तो आपको 20 विकेट लेने, T20 अगर आपको जीतना है तो आपको वो 120 या 150 या 190 या 210 जो है वो आपको डिफेंड करना है. यू कांट जस्ट गो आउट देयर, स्कोर 210 एंड से कि भाई चलो हम लोग एक ही बॉल डालते रहेंगे, 20 ओवर खत्म करवाओ और जीत जाएंगे गेम. तो bowling is very much key, and I think Rajasthan have nailed it in terms of who they've got for bowling. On the other hand, लखनऊ सुपर जायंट्स जो मेरी बहुत जबरदस्त और फेवरेट टीम है, जो कैप्टेन्ड बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर कह लो, कैप्टन कह लो, फिफ्थ प्लेयर कह लो, ओपनिंग पोजीशन कह लो, भाई जो मतलब वो बंदे ने तो हम लोग धोनी को हाईली रेट कर. सो यार सोचो कभी लाइक कभी बैठ के रात को जब सोने जाते हो सोचते होगे ना यार, धोनी को कितने हाईली हम लोग रेट करते हैं. उस बंदे ने सिर्फ 5 और 6 में खेला, इसने फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सारी पोजीशंस खेली, ये विकेट कीपर रह चुका. मतलब धोनी ने देखो कैप्टेंसी छोड़ दी, इतना प्रेशर था, और इस बंदे ने कैप्टेंसी भी कर रहा है, विकेट कीपर भी है भाई. केएल राहुल, ओहो क्या लखनऊ का प्लेयर है. नवाब बन गया यार. बट तुमने जो बोला कि हर पोजीशन पे खेला है, बट यार उसका स्ट्राइक रेट सेम रहता है हर
पोजीशन पे, ये थोड़ी सी नाइंसाफी है। कंसिस्टेंसी Taking तो nothing away from him, I think he scored 58 or 44, which was हाँ good, but I think in the context of the game, again, not very good. यही अगर विराट कोहली ने किया होता तो I think कुछ लोग विराट कोहली को रिटायर कर रहे होते, तो but because he is the great Lokesh Rahul, the best wicket keeper that India has ever had, the best captain that Lucknow has ever had, just that he has been that only captain of Lucknow. तो अ, क्या बोलूं मैं, मतलब लखनऊ के बारे में थोड़ा सा आई थिंक मेरी भी टीम है लखनऊ यार, डेफिनेटली, बट गौतम गंभीर के जाने से थोड़ा तो दुख हुआ था, बिकॉज ही इज अ ग्रेट टैक्टिशियन आई वुड से। बट जो उसके बदले में बंदा ये लाए हैं, जस्टिन लैंगर, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ जस्टिन लैंगर एज अ टैक्टिशियन। बहुत क्लोजली ऑस्ट्रेलिया को मैंने फॉलो किया था जब जस्टिन लैंगर कोच थे, तो आई थिंक जस्टिन लैंगर इज अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर गौतम गंभीर। बट अगेन स्क्वाड डेप्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो मतलब एक थोड़ी सी कमी, मतलब दोनों बैटिंग और बॉलिंग में, अभी अभी इन्होंने आवेश खान भी बेच दिया। आई थिंक अगर इनकी मैं बॉलिंग लाइनअप देखूं तो देव गॉट मोहसिन, देव गॉट नवीन उल हक, कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर एंड आयुष बड़ोनी, जो कि पार्ट टाइमर। बहुत हम्म बड़े नाम नहीं है यार इनमें से। रवि बिश्नोई आप कह सकते हो, उसके अलावा दे ऑल यंगस्टर्स, हॉट हेडेड पीपल लाइक कृणाल पांड्या। अजीब अजीब सही है, मतलब इनका बहुत ही एवरेज काइंड ऑफ प्लेयर्स इन्होंने भर लिए हैं, अच्छे प्लेयर्स को जाने दिया है। आई थिंक क्विंटन डिकॉक अगेन इज अ शाउट in this team. Every season he is a shout. Heavily reliant on Quinton de Kock. Partigal is a good signing, I would say, although I think zero बनाया पहले मैच में, but going forward I think दीपक हुड्डा और बडोनी पे आप रिलाई कर रहे हो फॉर योर मिडिल ऑर्डर, which is again very very shocking. पूरन और स्टोइनिस, वही इनका हो जाता है यार कि पूरन और स्टोइनिस को कहाँ भेजे ऑर्डर में। मतलब टू मी इट डिडंट मेक एनी सेंस कि आप इतनी नीचे उनको भेजा। पूरन गिवन की जिस तरह से मारता है, वो कल भी मारा उसने, बट इट्स ऑलवेज द केस कि दे लीव देम फॉर लाइक टू लेट, बहुत देर में आते हैं पूरन और स्टोइनिस। तो टैक्टिकली आई थिंक थोड़ा सा इनको, मतलब विद लैंगर कमिंग इनटू द स्क्वाड, थोड़ी सी एक इनको स्टेबिलिटी चाहिए कि किस बैट्समैन की कौन सी बेस्ट पोजीशन है जहां पे इनको खिलाना पड़ेगा। और बॉलिंग में एज आई सेड दे डोंट हैव अ फायर पावर। तो जितना भी मैं जाऊंगा अभी लखनऊ के मैचेस देखने, बट जितना भी सपोर्ट कर लो यार, आई डोंट सी देम दिस। हालांकि having said all of that, last two seasons they have been in top four, but this season somehow I'm getting that feeling कि शायद ये नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे टॉप फोर में। What are your thoughts? I completely agree. I think talking to firstly, जो you said about KL Rahul's innings today, मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा different point of view है। मैं I know I love to sort of dig at him and उसकी good performances को भी मैं ऐसे पोर्ट्रे करता हूँ जैसे उसने पता नहीं क्या ही गलत काम कर दिया है। बट आज मैं कहूँगा कि यार when you've got क्विंटन डिकॉक जो इतना ज़बरदस्त एक फायर पावर बैटर है, जो आपका 5 बॉलों पे आउट हो जाए, फिर पडिक्कल आपका आउट हो जाए, फिर हम्म, बदोनी भी आउट हो जाए, सो सडनली योर हम्म, मिडिल ऑर्डर फेल्स। आप एज ए कैप्टन यू थिंक यार शुड आई गो ऑल आउट राइट नाउ एंड मैं अपनी स्ट्राइक रेट देखूं कि 150 अबव होनी चाहिए, या फिर मैं एक एंकर इनिंग्स खेल के ट्राई करूं कि मैं एक ऐसी पोजीशन पे ले आऊं जब दीपक हुडा एंड पूरन एंड स्टोइनिस एंड दीज गाइस कम इन, कि these guys can have an impact, specifically Puran and Stoinis, which is why they've been brought into this team to get them over the line. A lot of लड़के भी 173 क्यों बने, because KL Rahul maybe played that anchor innings towards the middle of the हम्म, innings, and Puran came in and did his job at 156 strike rate पे। But you're right in saying कि भाई इनकी टीम में एक बॉलिंग अटैक इन द सेंस ऑफ, चलो आरसीबी के हम लोग कह रहे नहीं है, बट एट द सेम टाइम यू डू हैव जोसेफ, यू डू हैव सिराज, यू डू हैव सम सॉर्ट ऑफ सिम्बिलेंस एंड सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट टीम। बट इस टीम में तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सारे जो हैं ऑलराउंडर्स पकड़ लिए हैं और कहा है भाई नवीन उल हक आ जाओ भाई, बॉलिंग कर दो, कुणाल पांड्या बॉलिंग कर दो, एंड यू राइट, बिश्नोई एंड ठाकुर एंड बिदोनी बिदोनी ऑब्वियसली पार्ट टाइमर, but specifically Bishnoi and Mohsin, you can't rely on these guys game in game out and say कि भाई churn out those performances, give us those three or two or three wickets each game, economy अपनी 8 या 9 से कम रखो, and suddenly you've got a bowling attack. So for me, Lucknow, I don't see them having a huge chance. In this sort of season, they do have players which are missing, balance है नहीं squad में, and if I was to rank them, कि भाई they're almost for me as good as Delhi or Punjab, and that'll be a bottom three battle by हाँ, the end of आई this for एग्री, me. आई एग्री। Because which is good for the other teams, but at the same time, I don't see them going
too far this IPL. Talking about the other two teams really quickly, because I think we've been stretching out this podcast quite a long thing. Yeah. But गुजरात भाई इस वक्त 168 का टारगेट दिया है मुंबई इंडियंस को. दे लुक स्ट्रॉन्ग. They miss Hardik Pandya, I think, but Shubman Gill, the captain, playing well as well. What do you think about their team? Because मैं जब तक देखता हूँ इस टीम को तो मुझे लगता है भाई काफ़ी बैलेंस टीम है. They can make it. They do have a chance. For me, they're as good as maybe KKR or Sunrisers in that top four fight. Certain हूँ इनकी या नहीं हूँ ये तो नहीं पता अभी मुझे. Too early to call है ये मेरे लिए. But they do have good players. आई थिंक जो मैंने सीएसके के लिए बोला था ना कि दे नेवर हैड दैट टॉप काइंड ऑफ हिटर और दैट ह्यूज मैसिव साइनिंग, स्टिल दे वर एबल टू, क्योंकि दे वर एबल टू विन टाइटल्स एंड ट्रॉफीज थ्रू आउट. रीजन वही था यार कि कैप्टन वाज देयर, द कोर ग्रुप वाज देयर, द टीम वाज प्लेइंग फॉर ईच अदर. एक जो एक एटमॉस्फेयर था बहुत अच्छा था. वही एक लेगेसी मुझे बनती हुई दिख रही थी गुजरात में, हार्दिक पांड्या और आशीष नेहरा के अंडर, जिसका बहुत बड़ा यार, इफ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, पिछले दोनों सीजन में ये प्रेडिक्शन वीडियो जो हम अभी बना रहे हैं, जो भी लोग बनाते होंगे, नो वन वुड हैव सेड कि दे वुड बी द विनर और रनर अप गिव सीइंग द टीम. बट वो कर पा रहे हैं बिकॉज दे हैव दैट टीम दैट प्लेज फॉर ईच अदर, दे प्ले फॉर द फॉर द ट्रॉफी. They don't play for individual performances. They have a great tactician in Ashish Nehra who stands on the boundary, keeps instructing the players. तो मुझे लगता है यार कि this team is more about you can say that CSK टाइप की टीम है जिसको एक लीडर की जरूरत है. तो इनका लीडर तो अभी के लिए चला गया है, हार्दिक पांड्या. तो लेट्स सी हाउ काइंड ऑफ शुभमन गिल काइंड ऑफ स्टेप्स अप. बट जो इनका कोर है, डेविड मिलर हो गया आपका, शुभमन गिल हो गया, साहा हो गया, आई थिंक राहुल तेवटिया हो गया, राशिद खान हो गया. दीज पीपल दे आर कैरिंग द टीम. दे आर नॉट, राशिद खान को हटा दो तो इनके अलावा, और शुभमन गिल को हटा दो तो इनके अलावा, दीज आर नॉट लाइक वर्ल्ड क्लास टॉप नेम्स, बट स्टिल दे आर एबल टू कंसिस्टेंटली प्रोवाइड रिजल्ट्स. आज देखते हैं क्या होता है, इस सीजन में देखते हैं क्या होता है. बट आई स्टिल थिंक दे आर गुड इनफ स्क्वाड टू बी एबल टू challenge for top four, if not reach top four. I think there'll be good challenges for top four, but I don't see them, making a huge impact this time. You're right, in core team वो जो है वो missing है. And with Hardik Pandya, this is a big loss for them, not just this season, but in general for the next few seasons. And having that brand value जो उनकी थी, Hardik Pandya as a captain, वो अब diminish हो गई है. Now they need to restart and reset with Shubman Gill, and who I'm not saying isn't the right person. If anything, it's perfect for India as well कि भाई शुभमन गिल को experience मिल रहा है on this level to captain such players like David Miller. They've got Sai Sudarshan, Vidyaman Saha, and Rashid Khan, and experience मिल रहा है to carry on India's legacy as well, because India must be thinking कि भाई हार्दिक पांड्या 99% of the time इंजर्ड रहता है, Injured. बाकी 1% टाइम आईपीएल खेल रहा होता है, तो उसको कैप्टन बना नहीं सकते. रोहित शर्मा soon to be retired. Virat Kohli, as much as he's very fit, does not seem like he wants the captaincy back again anytime soon. So you need to find that core team and that core two or three players where you can rely on each game and say कि भाई आप कैप्टन हो, आप वाइस कैप्टन हो, and आप थर्ड कैप्टन हो, and you're all going to be working in that stuff. So I think other than that, the last team to talk about is Mumbai Indians. By very big changes they made with Hardik Pandya coming in, and as always, Mumbai Indians एक ऐसी टीम है जो हमेशा से एक एक फैंस को शॉक देती हैं. पहले 5 गेम हार के कहते हैं अरे यार हम हमें तो आता ही नहीं क्रिकेट. क्रिकेट क्या होता है, हम तो फुटबॉल खेलने आए थे, आप तो क्रिकेट खिला रहे हो हमारे. और फिर उसके बाद वो ऐसे खेलते हैं जैसे पता नहीं रन पे चले जाते हैं क्या मैनचेस्टर अंबानी ने सिटी की प्रॉमिस तरह. कर दिया. हाँ. एग्जैक्टली. तो इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स भाई. तो आई वुडंट रूल देम आउट एट ऑल. They've got a very balanced squad. Ishan Kishan as a wicket keeper and opener, Rohit Sharma के साथ, Hardik Pandya and Dame David in those middle order positions, and then with the bowling attack by Bumrah, we know how impactful he is in Indian pitches. They've got Luke Wood as well, Piyush Chawla and as their spinner, and Gerald Coetzee as well coming in. तो भाई क्या लगता है मुंबई इंडियंस का क्या यार सीजन. मुंबई तो मेरी मतलब आई वाज अ डाई हार्ड मुंबई. अगर मैं एनालाइज करूं तो भाई मतलब रोहित शर्मा वाली कैप्टन नहीं है, बट एटलीस्ट इज देयर एज एन ओपनर एट द टॉप, व्हिच इज अ ह्यूज ह्यूज थिंग. तिलक वर्मा, ईशान किशन,
टिम डेविड, सब्स्टिट्यूट में डेवॉल्ट ब्रेविस जो कि बेबी एबी है अपना। तो बैटिंग ऑर्डर इज गुड। देयर कैप्टन इज अ प्रूवन कैप्टन, मतलब इंडिया के लिए भी और गुजरात टाइटंस के लिए भी। ऑल दो इट्स अ ह्यूज टेस्ट ऑफ हिज कैरेक्टर। जब आपके खुद के फैंस आपको बू करते हैं, जब आपके खुद के फैंस आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इट्स अ ह्यूज टेस्ट ऑफ हिज कैरेक्टर। इट हैज बीन द मोमेंट ही हैज द मोमेंट दैट न्यूज केम आउट ऑफ हिज सीक्रेट मूव टू मुंबई इंडियंस, तब से लेके अभी तक उसके पर्सनल लाइफ पे भी अटैक किया है फैंस ने, उसकी वाइफ पे भी अटैक किया है। तो इट हैज बीन अ टफ टाइम फॉर हिम, एंड लेट्स सी हाउ दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो विच वाज एन एब्सोल्यूट जोक ऑफ मार्क बाउचर एंड हार्दिक पांड्या, मतलब क्यों कराई, किसने कराई, प्रेस रिपोर्टर्स क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, मतलब दिस इज अ प्राइवेट कंपनी राइट, मुंबई इंडियंस, तो वो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछने दे रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, फिर यू आर प्रेफरिंग नॉट टू आंसर देम, तो वो क्वेश्चन ही क्यों पूछे जा रहे हैं, क्यों हो रहा है ये, क्या ये नेगेटिव पीआर, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, बट थोड़ा सा ये जो मतलब आउटसाइड की जो चीजें हैं वो इनके गेम को अगर इम्पैक्ट करती है, देन दिस टीम माइट स्ट्रगल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आई डू फील कि मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस माइट जस्ट बी देयर इन द टॉप फोर। Talking about the bowling, as you said, there's Chawla, there's Koetzi, there's Bumrah, there's Luke Wood, who is again, Mumbai is known for scouting, big players who at their young, age, and I think Luke Wood could be one of those, youngsters who could shine this season. So I think one big miss for Mumbai Indians would be सूर्य कुमार यादव की इंजरी जो लास्ट मोमेंट पे हो गई है, बिकॉज सूर्य कुमार यादव नंबर वन T20 बैटर इन द वर्ल्ड, game changer, has been a stalwart for Mumbai Indians, already a legend. Missing him might just be a bit of a problem. तो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक आई सी मुंबई इंडियंस इन टॉप फोर दिस सीजन। हाँ, सूर्याज अ बिग मिस, मिस्टर 360 जो वर्ल्ड कप में शायद परफॉर्म ना कर पाए, बट जैसे ही उनको एक ऐसी वाइट बॉल दिखती है जो T20 फॉर्मेट में है, वो उनका बस नहीं चलता कि ये फील्ड में दिख कैसे गई मेरे को। इसको बाहर निकालो यहाँ से। वो उतनी तेजी से बॉल को फील्ड से बाहर निकालता है जितनी तेजी से KL राहुल अपनी इनिंग्स खत्म करता है इंडिया के लिए। बट एनीवेज, they're a team who will always be there for that top four contention, irrespective of how they start the season. They are the Man City of this of IPL. I think CSK जो है वो Man United है, उनके पास हमेशा से हिस्ट्री रही है. They've got the players, यस। and the only difference is कि भाई इसमें मैन सिटी मैन यूनाइटेड दोनों बड़ा अच्छे लेवल पे सक्सेसफुल हैं. With that being said, the most interesting part, I know एक एक गेम हो चुके हैं हर टीम के, and I think that's why we waited that to have that first game. Okay, we'll have a little bit more of an insight when we're predicting. कॉन्टेक्स्ट। So very quickly, so that I can edit this for a short as well, and put this on. So Yash, your top four orange cap winner, purple cap winner, and your winners for this IPL 2024. इट्स अ टॉप फोर इज अ बिग वन आई थिंक। सोचना पड़ेगा यार। मुंबई इंडियंस को मैं रेट कर रहा हूँ, SRH को मैं रेट कर रहा हूँ, और RR को कर रहा हूँ, RCB CSK। सो SRH हटा दो, आई थिंक RR, RCB और अदर नहीं, RCB को हटा दो, सॉरी RCB को हटा दो, RR, SRH, MI, CSK। And in terms of your orange cap, purple cap, and winners, ऑरेंज कैप यशस्वी जायसवाल, पर्पल कैप जसप्रीत बुमराह, व्हाट वाज द लास्ट वन? winners. विनर्स, ओके, विनर्स चेन्नई सुपर किंग्स। Oof, again. चलो सही है. थाला मेरे भाई हिसाब थाला। से आई थिंक, अच्छा मेरी आई एम लुकिंग एट माय टॉप फोर, और मेरे थोड़ा डिफरेंट है. आई एम सेइंग CSK मुंबई टॉप टू, विथ RCB एंड KKR मेकिंग इट थ्रू. RCB आई थिंक प्योर वाइब्स की वजह से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे विराट कोहली को जी Yeah, I think you're right. Bumrah could be a shout. I can also see someone else winning it. Maybe Mohammad Shami. No, sorry, Shami is injured. इंजर्ड। But Yasvindra could be a contender for that as well, if the pitches do go with that. And I think मेरे लिए final जो होगा वो CSK और RCB के बीच होगा, जिसमें finally this time RCB win this tournament. सो योर But प्रेडिक्शन इज मोर ऑफ लाइक विशफुल थिंकिंग, आई वुड से, yes, विराट I कोहली। think मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, because मेरे लिए मैंने हमेशा से कहा है यार, IPL is one
इंडिया को जब आप वर्ल्ड कप में देखते हो तो आप स्ट्रेसफुली देखते हो कि भाई जीतना है, यस, जीतना है, यस, जीतना है। विद द यस। आईपीएल मैंने कहा भाई मेरी जब कोई टीम ही नहीं होगी तो मैं हर गेम ऐसे देखूंगा कि कोई भी जीतेगा मैं सेलिब्रेट कर, तो बस वैसे ही उसी लॉजिक से मैंने कहा कि भाई आरसीबी को जिता दो। और ये सीजन में I really want to see it. Yeah, the guy deserves it. Virat Kohli deserves winning it, and the fact that he's been so loyal to RCB, he could have just simply said कि भाई ठीक है यार, तुम लोग नहीं जीत रहे हो, मैं जा रहा हूँ सीएसके के पास, मैं जा रहा हूँ मुंबई इंडियंस के पास, धोनी के साथ टीम अप करके जीतते हैं। तो बट द फैक्ट that he's been so loyal and stayed with RCB, I think he deserves a trophy, and I think yeah, RCB could do something. But let's see if they can or not. The next round of games will start भाई अगले 2 महीने तक सिर्फ आईपीएल 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 ही होगा हर जगह। जो भी आपको ऐड देखना है उसमें आईपीएल होगा, जो भी आपको वीडियो देखनी है उसमें आईपीएल होगा। सो जो भी मेक श्योर रील टू देखनी है। फॉलो अस एग्जैक्टली। पूरा इंस्टाग्राम मेरा भरा पड़ा हुआ है अभी भी धोनी के रिटायरमेंट से। आई एम प्रीटी श्योर अभी विराट कोहली 4 छक्के मार दे तो उससे भर जाएगा। एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट दैट एट ऑल। अगले 2 महीने मेरे कोई काम नहीं होने वाला है, मेरे कोई प्रोजेक्ट्स नहीं सबमिट होने वाले हैं। मैं यूनिवर्सिटी को सिर्फ यही बोलने वाला हूँ कि भाई सॉरी मैं बहुत बिजी हूँ बट realistically speaking there's going to be a lot of content on this channel whether you follow all of our social media pages or not, make sure you do that कि भाई क्योंकि रील्स मिलेंगी, सुयश को देखने को मिलेगा आपको एक्स्ट्रा कंटेंट उसका, जो फनी रील्स हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, as well as those preview and review videos on a daily basis. We will try to be as regular as we can, but भाई आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप सपोर्ट यस, देते रहोगे तब तक आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, because your support means that we keep growing and we getting inspired to make more videos like this. With the IPL ending right before the T20 World Cup, content यस। कहीं नहीं रुकने वाला है, तो make sure you subscribe and leave a like rating. Follow us for more cricket news on a daily basis. हर जगह न्यूज़ आती रहेगी, कोशिश करते रहेंगे कि हम लोग कुछ ना कुछ करते रहें। And that's it for us today. I know pretty long episode, but that's something that we needed to do for the IPL and the festival of cricket. So thank you very much, Suyash. Great conversation as always, and we'll see all of you guys next time. Until then, stay safe. सी यू।